So today we'll talk about the redox reactions. So first of all, we'll talk about oxidation. What is oxidation? Oxidation is defined as the process in which an atom or ion loses one or more electrons. ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਟਮ ਜਾਂ ਆਇਨ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਲਾਸ ਕਰੇ। जैसे कि आप अपनी प्रीवियस क्लासेस बच्चे पढ़िया हुआ है कि मोस्ट ऑफ जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है, पोटाशियम है या मैग्नीशियम है या एलुमीनीयम है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है अपनी एक्व स्टेट के विच या मोल्टन स्टेट के विच, तो दैट इज़ नेम्ड एज ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम है तो जो आप इसका एक्व स्टेट लेने हाँ तो एक इलैक्ट्रॉन का लॉस करके केटाइन का फॉर्मेशन करता है। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ केटाइन आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। So that process is named as oxidation. Even in electrolytic cells, there is basically chloride anion, for example. So anions can also lose electrons to make atoms or their molecular states, stable states. So chloride ion when loses one electron, it lead to form chlorine atom, which after that converts into the molecule. तो कोई भी anion या कोई भी ion और कोई भी atom, mostly metals और metalloids, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं तो that is named as oxidation. Next is reduction. What is reduction? Reduction is a process in which atoms or ions gains one or more electrons. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ reduction ਉਹ process ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ atom or ion electron ਦਾ gain ਕਰਦਾ ਹੈ, यानी कि इलेक्ट्रॉन ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ है, राइट, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने तो बाद, तो that is named as reduction. तो जैसे क्लोरीन एटम है दैट इज़ हाईली इलैक्ट्रोनैगेटिव इन नेचर, तो जो इलैक्ट्रॉन का गेन करता है देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन, क्योंकि इन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ क्लोराइड एनायन ऑलरेडी बनया होया है उन्हें इलैक्ट्रॉन का लॉस किया है, दैट्स इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। But here atom, due to its electron negativity, due to more effective nuclear charge, it gains electron and it lead to form chloride anion, right? तो जो ऑक्सीडेशन होंदा है बेटे तो कैटायन बनता है, और जो रिडक्शन होंदी है तो मोस्ट प्रोबेबली अपने को एनायन का फॉर्मेशन होंदा है, क्योंकि इलैक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, जो गेन करेगा तो एनायन बनाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अपने को ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एटम अपनी इलैक्ट्रॉन नेगेटिविटी करके जो दो इलैक्ट्रॉन्स का गेन करता है तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एनायन, तो दैट इज नेम्ड एज रिडक्शन, राइट। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ कैसे रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ दैट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इफ यू आर अनेबल टू डिटरमिन अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हाउ डज इट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडेशन की सी अपने को जो इलैक्ट्रॉन का लॉस करता है, बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की होंदा है अपने को जो इलैक्ट्रॉन का गेन करता है। मीनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिल्कुल उसी तरह जैसे कि फाइनेंसिंग एजेंट है, तो फाइनेंसिंग एजेंट की करता है दूसरे नू फाइनेंस करता है। उसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब की हो गया जो दूसरे नू ऑक्सीडाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने को है ऑक्सीडाइज करने का मतलब की हो गया वो जो इलैक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो अगर वो लूज करेगा तो एक ही करेगा गेन करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो दूसरे नू ऑक्सीडाइज करे, विच ऑक्सीडाइज द अनदर स्पीसीज प्रेजेंट विद इट, और विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नेम्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Then next one is named as reducing agent. Reducing agent which has capability to reduce another one, ठीक है। तो फाइनेंस वो ताई करेगा ना जो खुद को पैसे होंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट मीनस जो दूसरे नू रिड्यूस करे। दूसरे नू रिड्यूस करने का मतलब की है कि दूसरा इलैक्ट्रॉन का गेन करेगा, हुण इनू तो इलैक्ट्रॉन का लॉस करना पएगा, तो जो इलैक्ट्रॉन लूज करे वो सबसटेंस हुंदा है रिड्यूसिंग एजेंट, जो इलैक्ट्रॉन गेन करे वो हुंदा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल ऑपोजिट टू दैट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल ए ओ रिएक्शन है या प्रोसैस है जिहदे विच इलैक्ट्रॉन का लॉस है, ठीक है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो इलैक्ट्रॉन का गेन करेगा। इन सिंपल तुसी एक रिएक्शन का समझ सकते हो बेटे। फॉर एग्जाम्पल जैसे +1 वाला रिएक्शन आप बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हुआ इन रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर। तो फॉर एग्जाम्पल बेटा इतने जिंक है अपने को कॉपर 2 पॉजिटिव है इन दियर एक्व स्टेट्स, ठीक है, दैट इज इन इट्स सॉलिड स्टेट वर्क एज एन इलेक्ट्रोड, तो दैट इज इन एक्व स्टेट एंड दैट इज इन सॉलिड स्टेट, ओके गॉट इट। तो ये अपने को की है बेटा तुहानू इत्थे की दिख रहा है कि जो जिंक है उहदे ते अपने को 0 चार्ज है क्योंकि अपनी एलीमेंटरी स्टेट च है,
+1 च ਆਪਾਂ डिस्कस किया होया है। तो जो कॉपर है वो भी अपनी एलीमेंटरी स्टेट दे विच है, राइट। तो ਇਹਦਾ मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ that is going from its 0 oxidation to +2 oxidation state means ਇੱਥੇ 0 ਸੀ, ਇੱਥੇ +2 ਹੋ ਗਿਆ, means it is going to lose 2 electrons। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है तो व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, दैट इज मेकिंग अ कैटायन इज नेम्ड एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो दैट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हो गया है। नैक्सट अपने को है कॉपर 2 पॉजिटिव। तो कॉपर 2 पॉजिटिव क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव किन्ने ते पहुंच गया, 2 पॉजिटिव तो 0 ते डिक्रीज हो गया ना, तो इट मीन्स रिडक्शन, इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन, right? You can simple determine the oxidation and reduction from their charges. For example, this copper from 2 positive to 0, there is decrease in the positive oxidation state, so that's why that is undergoing reduction। अगर positive charge decrease हो रहा होवे, reduce हो रहा होवे, तो that is reduction, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का gain करता है। और अगर तुहाडे कोले पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा होवे, तो ਇਹਦਾ मतलब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं, तो इट मीन्स दैट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। एक तो एक सिंपल तरीका है, अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है, तो दैट इज रिडक्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो अ रिएक्शन विच कंबाइंस और विच बेसिकली कंसिस्टेड ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट इज नेम्ड एज एन a redox reaction, that is a combination of an oxidation and reduction, that is named as a redox reaction, ठीक है। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ oxidation ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, reduction ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, redox reaction। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੌਣ oxidizing agent ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ reducing agent ਹੈ, तो simple ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ oxidation ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ that is reducing agent, और जो ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ that will work as an oxidizing agent, क्योंकि ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन ਦਾ लॉस, ਤੇ रिड्यूसिंग एजेंट ਦਾ डेफिनेशन ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ which gains which loses electrons। तो जिंक इलेक्ट्रॉन ਦਾ लॉस कर रहा है, that's why that will work as a reducing agent। कॉपर इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, तो इट मीन्स दैट विल वर्क एज एन ऑक्सीडाइजिंग agent, and the combination of this oxidation and reduction, that reaction is named as redox reaction। Similarly, we will talk about this reaction, that is very famous reaction for determining the reactivity of any metal, right? So that is a metal because it is liberating hydrogen in the presence of an acid। So for example beta, here zinc is undergoing from 0 oxidation state to +2 oxidation state, right? So it means that is undergoing oxidation। तो ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, oxidation। now hydrogen is moving from +1 oxidation state is given here, +1 to 0, its molecular state, stable state, so that's why the oxidation number is 0 here। so +1 to 0 decrease हो गया ना, तो that is reduction। or zinc to zinc ion, that is oxidation। so it means if it is undergoing oxidation, that will work as a reducing agent, and reduction ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, that will work as a oxidizing agent। so it means reducing agent is which loses electrons, oxidizing agent is which gains electrons, right? so that is a redox reaction।